Hello all of you. Good morning, people. Am I audible to all of you? The friends who are joining from YouTube, am I audible to you? Yes. So, just let me check the connection once. Okay. Okay, that is perfect. So, okay. So let's get started with the session. So all of you know that today's session is on the sedition laws in India, right? So sedition has been of late very much into news, and so this becomes very important for all the judicial services examination. Okay. So when we talk about the curriculum of judicial services examination, then all of us are aware that current affairs and general knowledge holds a very significant part of it, both in the preliminary examination, also in the mains. Okay, so we'll get started with the class, but let me first give you a brief introduction about the program. So this program has been brought to you by Unacademy. So people, Unacademy has launched a brand new program for PCSJ. So all the judicial services are catered to in this program. Okay, so if you like the contents of this session, you can obviously go for a subscribed version of the program. After that, you'll be able to avail a lot of other facilities which are otherwise not available in the general videos which are here on the YouTube. Okay, so the features of the Unacademy Plus program are that you can have the live classes from your home, right? That obviously you must be aware of it. So just a second. Yeah. After that, you also have unlimited access to all the courses which are there on the Unacademy. So not just any one course, single course, but all the courses which are there on the Unacademy platform, that is available to you. After that, obviously, all the like when it comes to the platform of Unacademy, you have got the top educators from across the country. Okay, so if you go for any traditional coaching, then obviously it's very limited. The interaction of yours with the educators is very limited. You have got a particular institution, and there will be educators who are associated with that. They'll be teaching you. But here, from across the country, the top educators of all the institutions for that matter, they are associated with an academy, so you get a very personalized access in that case, right? तो जिससे आपको पढ़ने का मन कहेगा उससे आप पढ़ सकते हो, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि इन टीचर्स, मान लो आपने एक जगह कोचिंग कर रखी है तो आपको बस वहीं पढ़ना है, वो कंपल्शन यहाँ पे नहीं है. आपको यहाँ पे ढेर सारे एडुकेटर्स हैं और आप किसी की भी क्लास कर सकते हो. ठीक है. अगला, यू विल बी गेटिंग एन एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द एंटायर सिलेबस. तो पूरा सिलेबस जो है आपका, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू के लिए भी जो सेशंस होते हैं, तो सारा का आपको एक यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जॉस्टिव कवरेज मिलता है. तो ना ही सिर्फ जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो, बल्कि करंट अफेयर्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, एवरीथिंग व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन, यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू दैट. ओके. After that, you will be having proper doubt clearing sessions. So after every class we have got doubt clearing sessions जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और अपने डाउट्स के साथ साथ जो कि आप लोग के बाकी प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग को अप्रोच करने में प्रॉब्लम हो रही है किसी लॉ के सब्जेक्ट को. लॉट ऑफ पीपल हैव दिस प्रॉब्लम कि प्रोसीजरल लॉ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है. तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आप अपने मेंटोर से पूछ सकते हैं, उनका कंसल्टेशन ले सकते हैं और उनकी एडवाइस को फॉलो भी कर सकते हैं. After that, after see education and learning is fine, but the end result is scoring good marks. So for that we have got live test series at your disposal. So if you are a plus member, you will be getting free access to the live test series and also the analysis of those mocks. जो मॉक सीरीज आपके पास है, मॉक टेस्ट सीरीज, उसकी एनालिसिस भी होती है, तो आपके पास ये एडेड एडवांटेज है. अदरवाइज इफ यू गो फॉर अ नॉर्मल टेस्ट सीरीज, तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा लेकिन उसकी एनालिसिस नहीं मिल पाती है. यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू उसकी एनालिसिस भी मिलती है. सो दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट as far as this program is concerned. Okay, obviously all the study material are available to you in the PDF format, so you can get that. And for the mains, you have got answer writing sessions because mains is a subjective examination, so there you also have got this answer writing session. Okay, so these are the features of the program. The subscription, the plan for subscription is like it's there before you. You can view this. The plan for subscription when it comes. So 1 month subscription, we are running Unacademy is running a promotional offer. So that is available for just ₹99, but that is only for limited period, right? So you can avail this offer, and obviously you can get a hold of
क्या क्या प्रोग्राम में क्या फीचर्स हैं, तो इसको आप कम से कम देख सकते हो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है. सो जस्ट गो फॉर अ 1 month प्रोग्राम, जस्ट ट्राई इट आउट. आई एम प्रीटी श्योर विल बी लाइकिंग इट. आप लोगों को पसंद आएगा वो चीज़, तो उसके बाद अपना डिसीजन आप ले सकते हैं. हाँ, अगर आपको सब्सक्राइब करना है अनअकैडमी के प्लस प्रोग्राम के लिए, डू यूज दिस प्रोमो कोड PCSJ10. So what happens is you get a 10% discount there. So that is very helpful, right? Next, when we talk about the program, तो इसमें सारे ही पार्ट्स जो होते हैं इसके, तो यहाँ पे तो कुछ सिर्फ लॉज के मेंशन्ड है, वो भी सारे लॉज की लिस्ट नहीं है. So we have, like, it's mentioned there and others. So there are a lot of things which are available here, right? I mean all the important ingredients which are important for the exam, वो सारा ही चीज़ होगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे सिविल प्रोसीजर, procedural laws, substantive laws, adjective laws, general knowledge, current affairs, language, everything. You get a proper mentoring for all those topics. Okay. Moving ahead, people. These are the YouTube channels, the handles for the YouTube channel and the Unacademy Telegram channel. So you can follow this for regular updates, and you will be getting those. Okay. So now let's get started. All of you are aware that today's session is on the sedition laws, right? सेडिशन लॉज पे आज का सेशन है, और सेडिशन लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अभी आप लोग का MPPCS होने वाला है, आई गेस दैट इज शेड्यूल्ड फॉर 20th of March, and after a month you are having this Haryana PCSJ also, right? So this is for Madhya Pradesh PCSJ, the date, and Haryana PCSJ is also in the late 20s of April. Okay, तो दोनों ही एग्जाम आ रहे हैं, और आपको पता है ऑफ लेट सेडिशन हैज बीन वेरी मच इनटू न्यूज़ बिकॉज ऑफ द टूल किट केस. You must have heard about this toolkit case, right? तो आप लोग को पता होगा कि जो ये फार्म लॉज का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे वो प्रोटेस्ट एक समय वायलेंट हो गया था, स्पेशली ऑन 26th of January. तो उसमें इन्वेस्टिगेशन पे पता चला था कि अ पर्टिकुलर टूल किट वॉज शेयर्ड, और उस टूल किट में मेंशन हुआ था कि प्रोटेस्ट कैसे कैसे क्या होना है, किसको क्या करना है, किस डेट पे क्या प्रोग्राम होना है. तो इस केस में सेडिशन चार्जेस का भी एप्लीकेशन हुआ था. ठीक है, तो सेडिशन के जो चार्जेस का एप्लीकेशन हुआ था, दैट वाज वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल. Sedition has always been a very very controversial law. Okay, so sedition becomes very very important for current affairs. Why? Because it is in news firstly, and secondly all of us are writing here judicial services examination, so it becomes very pertinent to the exam also. So you are going to be judicial officers, so obviously it becomes very incumbent upon you to know these things, right? So talking about sedition, people, sedition का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं सबसे पहले, तो देखिए sedition का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है? What is sedition? What is sedition, people? Any idea? देखो सेडिशन को अगर हम लोग ऐसे समझें, सेडिशन होता क्या है, तो नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बात बोल दी जाए, एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज द सेडिशन. बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर एंड से ट्रू डेफिनेशन. ये एक थोड़ा सा रफ डेफिनेशन है, ले मैन के लिए डेफिनेशन है, और ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेडिशन, सेडिशन इज बेसिकली अ क्राइम. इट्स अ क्राइम. तो अगर कोई क्राइम होगा, अगर कोई ऑफेंस होगा, सो ऑफेंस एंड क्राइम वन एंड द सेम थिंग. सो इफ देयर इज अ क्राइम और ऑफेंस, जनरली वी हैव गॉट ऑल द ऑफेंसेस लिस्टेड अंडर द इंडियन पिनल कोड. जो IPC है हमारा, इंडियन पिनल कोड 1860, उसके अंडर हमारे क्राइम्स मेंशन्ड है. तो अगर मैं सेडिशन की बात करता हूं, तो दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 124 कैपिटल A. 124 कैपिटल A के अंडर सेडिशन मेंशन्ड है. देखो आप देख रहे हो, जहां यहाँ पे कैपिटल A आ गया, तो इट मींस देयर वाज सम अमेंडमेंट थ्रू व्हिच इट हैज कम. तो ये अमेंडमेंट कब आया? दिस अमेंडमेंट केम इन 1870. 1870 में एक अमेंडमेंट आया जिसके थ्रू 124 कैपिटल A को हमारे इंडियन पिनल कोड में जोड़ दिया गया. ठीक है, सो दिस इज लेसर नोन फैक्ट, अदरवाइज ऑलमोस्ट एवरीवन नोज कि 124 कैपिटल A में है. व्हेन आई से एवरीवन, देन ऑब्वियसली द एस्पिरेंट्स फॉर दीस एग्जामिनेशंस, नॉट एवरीवन. बट ये अमेंडमेंट कब आया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट वाज ब्रॉट इन 1870. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेडिशन. जब मैं सेडिशन की बात करता हूं, देखो सेडिशन एज इट हैज बीन डिफाइंड अंडर 124 कैपिटल A, इसके अंदर तीन चीजें आती हैं. जब भी कोई इंसान, व्हेनेवर अ पर्सन ट्राइज टू, चाहे वो ट्राई करे, चाहे वो उसमें सक्सीड कर जाए, चाहे ट्राई कर रहा है चाहे वो सक्सीड कर जाए, डजंट मैटर, जरूरी नहीं है कि उसको सक्सेस मिल जाए. सो व्हेनेवर अ पर्सन ट्राइज टू और कमिट्स, सो तीन कंडीशंस हैं, तीन चीजें हैं. मैं एक एक करके लिस्ट कर देता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तीन चीजें हैं. तो पहला तो ये चाह रहा है कि लोगों के मन में कंटेम्प्ट आ जाए. फर्स्ट वन इज कंटेम्प्ट. नेक्स्ट वन इज डिससैटिस्फैक्शन. डिससैटिस्फैक्शन. ओके, तो कंटेम्प्ट,
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 124 कैपिटल ए दैट इज सेडिशन इज सेज दैट सेडिशन इज एन एक्ट थ्रू विच इन विच अ पर्सन ट्राइज टू इंस्टिगेट बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है कोई आदमी किसी को प्रोवोक कर रहा है आप प्रोवोक कर रहे हो किसी को क्या करने को कि उसके मन में या तो कंटेम्प्ट आ जाए या तो डिसअफेक्शन आ जाए ठीक है प्रोवोक कर रहे हो क्या तो डिसअफेक्शन आ जाए या तो कंटेम्प्ट आ जाए या तो उसके मन में कोई बेसिकली अगर इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे तो उसके मन में कोई ऐसा प्रॉब्लम देखिए कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन ये दोनों वर्ड्स के साथ एक और वर्ड है मिलता हुआ मतलब एक मिनट रुक जाइए मैं एक एक करके वर्ड समझा देता हूँ पहले ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द नेक्स्ट वर्ड फर्स्ट लेट मी क्लियर दीज वर्ड्स आउट otherwise this will lead to confusion first word was contempt का मतलब होता है disobedience okay so you are trying to spread disobedience second one is disaffection disaffection का मतलब क्या होता है basically what is affection means liking towards something disaffection means just give me a second there are some questions I guess so people let me just take the questions also they are coming on the YouTube platform so let me check I got an alert for the question Okay. So the friends who are there on the platform, I don't think anyone is getting this thing on the platform. So all of you are here on the YouTube channel only, right? Okay. Just give me a second. Sorry, I'm not able to fetch the comments there. पता नहीं क्यों comments मेरे को दिख नहीं रहा है. There is some technical glitch or what is happening. I don't know, but don't worry. मैं अभी मेरे को comment sorry I'm not able to follow the comments. So if you have comment, just type it once again because I had got a comment but I'm not able to track it. Okay, coming back to our discussion. So people, I told you अगर आप या तो contempt फैला रहे हो, contempt मतलब क्या होता है disobedience. मतलब आप जैसे कोर्ट का contempt आप लोगों ने सुना होगा राइट कि आप कोर्ट की बात ना मानो राइट या कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज कर दो सो दैट इज disobedience और contempt. Second one was disaffection. I was telling you what is disaffection. Affection का मतलब क्या होता है love, care for someone. Disaffection is right opposite. इसका right opposite होता है disaffection कि जब फॉर एग्जाम्पल आई लव माई कंट्री लेकिन अगर आप मेरे मन में ये कह दो कि आपकी कंट्री खराब है आपको याद प्यार नहीं करना चाहिए अपनी कंट्री से तो दैट बिकम्स डिसअफेक्शन एंड द लास्ट वन इज हेट्रेड. तो हेट्रेड इसीलिए मैंने रोक के रखा था क्योंकि इन दोनों के साथ बहुत कंफ्यूज हो सकते हो. देखो यहाँ पे डिसोबीडियंस की बात हो रही है यहाँ पे नॉट लविंग समथिंग की बात हो रही है बट यहाँ पे हेट्रेड की बात हो रही है. देखो नॉट लविंग समथिंग एंड हेटिंग समथिंग आर डिफरेंट थिंग्स. जैसे नॉट लविंग समथिंग एक तरह से न्यूट्रल हो गया लेकिन हेटिंग समथिंग दिस बिकम्स अ नेगेटिव एस्पेक्ट. तो चाहे किसी को कोई आपको बोल रहा है कि आप अपनी कंट्री को हेट करो ये जो तीनों ही फीलिंग्स है ना दिस हैज टू बी अगेंस्ट द कंट्री दिस हैज टू बी अगेंस्ट योर कंट्री. सो इफ एनीवन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग नाउ टेकिंग द क्लू फ्रॉम द डेफिनेशन 124 कैपिटल ए. सो if anyone is trying to provoke you to have contempt, disaffection or hatred towards the country that is called sedition. Okay, तो सेडिशन को अगर सही से एक बार फिर से मैं बताऊं तो सेडिशन क्या होता है कि if a person is trying to promote contempt, disaffection or hatred towards the country, towards the government of India, then that will be called sedition. Okay. Now, one thing is to be kept in mind
When I say the government of India, then government of India does not necessarily mean any political party, right? Say for example BJP is in power right now, तो अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट कुछ बोलोगे दैट विल नॉट बिकम कंटेम्प्ट. समझ रहे हैं? जब मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन दिस इज सिंबॉलिक ऑफ इंडिया, दिस इज सिंबॉलिक ऑफ इंडिया, ओके, सिंबॉलिक ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया. समझ रहे हो? तो जब भी आप पहला चीज आप कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन और हेट्रेड, इन तीनों में से अगर आप कोई भी एलिमेंट फैला रहे हो लोगों के मन में और उनको प्रोवोक कर रहे हो कि उनके मन में कंटेम्प्ट आ जाए या डिसअफेक्शन आ जाए या हेट्रेड आ जाए टुवर्ड्स इंडिया और टुवर्ड्स लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो वर्ड यूज हुआ है 124 कैपिटल ए में, दिस इज लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो इफ देयर इज एनी सच एक्टिविटी देन दैट विल फॉल अंडर सेडिशन. ठीक है, देखो सेडिशन कई बार, सेडिशन को हम गैगिंग लॉ भी बोलते हैं. गैगिंग लॉ इन द सेंस दैट इट इज ट्राइंग टू सप्रेस पीपल, इट इज ट्राइंग टू सप्रेस द ओपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. देखो नॉर्मली अगर गवर्नमेंट का आप ऑपोजिशन कर रहे हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का ऑपोजिशन कर रहे हो, तो वो चीज तो डेमोक्रेसी है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी अलाउड. डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन तो होता ही होता है. लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी को आप स्कैंडलाइज कर रहे हो, लोगों के मन में ये फैला रहे हो कि कंट्री को हेट करो, कंट्री से डिसअफेक्शन रखो, दैट विल बिकम सेडिशन. तो डू नॉट कंफ्यूज. ओके, so there's a very thin line of difference here, but that is very very fundamental, that sedition is not merely criticizing the government or opposing some policy of the government. वो आपका criticism या opposition that does not become sedition. Sedition is when we are against the idea of the country, idea of India. For example, let me just share a case with you. So there was this case called Kedarnath versus Union of India. So in the case of Kedarnath versus Union of India, the Supreme Court had held कि criticizing the government, criticizing the policy of the government, that does not become sedition. अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो या अपोज कर रहे हो, that does not become sedition, because this is the very fundamental of a democratic setup, right? So in democracy this is a very fundamental thing, so that does not become sedition. Sedition तब होता है जबकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया एज अ कंट्री को आप अपोज कर रहे हो, दैट बिकम सेडिशन. ओके, सो दिस वाज केदारनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये चीज क्लैरिफाई, सॉरी, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. केस इज केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. सो इन दिस केस दिस वाज क्लैरिफाइड. अनदर रीसेंट केस रिगार्डिंग सेडिशन इज शर्जील इमाम. द केस इज शर्जील इमाम वर्सेस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. तो ये तो काफी रिसेंट केस है, कंपैरेटिवली रिसेंट केस. दिस इज ऑफ 2020 ओनली. सो ऑल ऑफ यू नो द प्रोटेस्ट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वर गोइंग ऑन प्रीवियस ईयर अराउंड दिस टाइम, कोविड के पहले. तो उस समय क्या हुआ था, एक देयर वाज अ मैन कॉल्ड शर्जील इमाम. सो व्हाट ही डिड, ही वाज सेइंग दैट लेट्स से इफ दिस इज इंडिया, राइट, दिस इज इंडिया, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऐसा है रफ इंडिया का मैप. तो ये कह रहे थे कि जो ये पतला सा इलाका है जो इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर, जो नॉर्मल ये जो इंडिया है और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसको जो कनेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं चिकन कॉरिडोर, चिकन नेक कॉरिडोर. तो जो चिकन नेक कॉरिडोर है वो ये बोल रहे थे कि इसको अलग कर दो, इसको तोड़ दो, यहाँ पे ब्लॉकेट कर दो, जिससे कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये बाकी के इंडिया से अलग हो जाए. इससे हम क्या करेंगे, इंडिया के टुकड़े कर देंगे. नाउ यू सी दैट दिस इज नॉट मियरली क्रिटिसाइजिंग द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का ऑपोजिशन नहीं हो रहा है. यहाँ पे इंडिया एज अ कंट्री के टुवर्ड्स आप हेट्रेड फैला रहे हो. तो जहां भी आप कंट्री के लिए हेट्रेड फैलाओगे या डिसअफेक्शन फैलाओगे या आप कंटेम्प्ट फैलाओगे, तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है, तो वो केस हो जाएगा सेडिशन का. क्लियर ऑल ऑफ यू? आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस इशू, सेडिशन? सो टुडेज एजेंडा एज वी हैड स्टार्टेड विद वाज द लॉ ऑफ सेडिशन, राइट? तो सेडिशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे. सेडिशन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू वंस अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक्ड अबाउट द प्रोविजन दैट इज 124 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860. दिस टॉक्स अबाउट सेडिशन. सेकेंडली आप देख रहे हो कैपिटल ए है, तो दिस केम थ्रू एन अमेंडमेंट. दिस अमेंडमेंट वाज इन 1870. थ्रू दिस अमेंडमेंट इट केम. आफ्टर दैट sedition becomes very very important. Why? Because in the current scenario the toolkit case and the other protests which are going on,
sedition laws have been applied. Okay. There was one more scenario where Farooq Abdullah, you know Farooq Abdullah. So Farooq Abdullah के against भी एक case file हुआ था, sedition का किसी ने file किया था. So sedition becomes very much into news, right? तो law के लिए important है, current affairs के लिए भी important है. Then we got to know the essentials of sedition. Essentials of sedition में we discussed three essentials. Whenever you are trying to incite or whenever you are trying to provoke people to have what? First of all, disaffection. Next one is hatred, and the last one is contempt. ये तीनों ही concepts, I guess it is very much resolved. It is very much clear to all of you. So disaffection, hatred, and contempt towards the country, towards the India, legally elected government of India. This is called sedition. Then we discussed about two cases. The first one was the state of the case of Kedarnath versus state of Bihar. So here the Supreme Court held that merely criticizing the policies of the government, if you are criticizing the policy of the government, then that is not sedition. This is not sedition. Okay. Second case was the case of Sharjeel Imam versus NCT of Delhi. This case was of sedition. Why? Because he was saying अगर ये इंडिया है तो ये चिकन नेक कॉरिडोर है, इसको रोक लो, ब्लॉकेट लगा दो ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टुकड़े हो जाए इंडिया से. ओके. So this is all about sedition. I hope everyone was clear with the concept which were discussed in today's class. So if you got some doubts, you can post the doubts once again. I was trying to reach out to the doubts a while ago, but I could not just track it. My my device is not showing that thing. So if we have got doubts, you can just mention it. I'm waiting. I'll wait for a minute for the doubts, and then we'll wrap it up. Okay. Okay, so I believe everything is clear. So if everything is fine, then we can end the session, right? So thank you, people. Stay connected for the upcoming sessions. There will be more sessions which will be coming later in the day. They will be pertaining to law. So once again, I would say, if you like this session, if you found the session helpful, then you can go for subscription for the Plus program. There you'll be getting a lot more structured format of studies. So you can go for that. And if you are going for subscription, do use this promo code, that is PCSJ10, to get attractive discounts. Okay. Thank you, people. Thanks a lot.